हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो तुम लोग सभी? गाइस, न्यू बट्टिस्टूटा कैसा है मेरे को रिव्यू देना गाइस। बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर कैसा है, क्योंकि गोल पोचर वाला प्लेयर पूरा फायर अप था मैन। रिव्यू फॉर दिस वर्ल्ड क्लासिकल एपिक्स, तो इसका रिव्यू मैं तुमने दे देता हूँ गाइस। पहले क्रिएटिव प्ले मेकर, ये एक अच्छा कार्ड है गाइस। अगर तुमको ये कार्ड मिलता है तो तुम इसको खिलाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये पेले का। एज भी ठीक ठाक ही है, 23 एज, 173 हाइट, ब्राज़ीलियन। ये मतलब बोल सकते हो कोई एक टाइप का लेजेंड पेले का कार्ड है। एआई प्ले स्टाइल में आपको मैजिक रन मिल जाएगा गाइस। फूड वर्क रेगुलरली दिया है गाइस। वीक फूड वेरी हाई फ्रॉम अनवर्डिंग, ये भी ठीक ठाक दिया है गाइस। और इंजरी रजिस्ट्रेशन हाई, बहुत ही अच्छा दिया है। ऑफेंस क्रिएटर, आप इसके साथ डबल टच, सोलो कंट्रोल, मोमेंटम ड्रिबलिंग, हेडिंग, लॉन्ग रेंज क्रॉलर, फर्स्ट टाइम शूट, फिनोमिनल फिनिशिंग, थ्रो पासिंग, आउटसाइडर कर्ल, गेम्समैनशिप। गाइस टैक्स बहुत ही अच्छा है। अगर ये कार्ड आपको मिलता है तो आप बहुत ही लकी हो गाइस, आप इस पैक के लिए जा सकते हो। जेरेड मूलर का कार्ड मुझे उतना भी खास नहीं लगा, क्योंकि गाइस अभी के गेम में तुमको लगता है स्पीड, और इस बंदे के पास एक ही डिसएडवांटेज है, स्पीड का। प्लस फॉक्स इन द बॉक्स मैं उतना खिलाता नहीं हूँ गाइस। अगर तुम फॉक्स इन द बॉक्स खिला सकते हो तो तुम डेफिनेटली जाओ इस कार्ड के लिए, बहुत ही अच्छा कार्ड होगा आपके लिए। बट मेरे को उतना भी मतलब उस हाइप का कार्ड नहीं है। इस कार्ड में आपको अटैकिंग अवेयरनेस 101 तक चला जाएगा। बॉल कंट्रोल भी बंदे का बहुत ही अच्छा है। फिनिशिंग अच्छा जाएगा। स्पीड 90 तक ऑलमोस्ट चला जाता है। और किकिंग पावर अच्छा खासा है, मतलब 92 93 तक। ये आपके प्रोग्रेशन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है गाइस, ठीक है। स्ट्राइकर इंस्टेंट दिया हुआ है, ठीक ठाक कार्ड है गाइस। और ये सबसे इस पैक का सबसे बहुत ही हाइप कार्ड है गाइस, जाइन फ्रांसिस्को जोला। अगर गाइस ये कार्ड तुमको मिलता है, इसका बीट्स कलर भाई बहुत ही शानदार है। ये कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरे एक सब्सक्राइबर को मैंने पैक ओपनिंग करके दिया था, उसका वीडियो मैंने नहीं डाला है, ठीक है। पर मैंने इसका परफॉर्मेंस चेक किया है गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कार्ड है। अगर आपके पास पुराना सॉन होता है तो इसके लिए मत जाओ, क्योंकि उस कार्ड का कोई कंपेयर नहीं होता गाइस। पुराना सॉन का कार्ड बहुत ही अच्छा है, पर ये अभी के लिए बहुत ही अच्छा खेलेगा। फिर मेंटेनेंस 2-3 हफ्ते के बाद ये भी स्लो पड़ जाएगा, बट अभी ये कार्ड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दे रहा है। क्रिएटिव प्ले मेकर है, एआई प्ले स्टाइल, टैक्टिस, मैजिक रन। इसका क्रल गाइस 99 तक जाता है भाई। सब कुछ देखो, फ्रॉम अनवर्डिंग की जगह स्टैंडर्ड दे दिया है। मतलब ये बंदा आपका, अगर आप 100 मैचेस खेलोगे
तो 80% मैचेस ये बंदा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा, मतलब पूरा एरो अप नहीं जाएगा, एरो स्टैंडर्ड ही रहेगा, क्योंकि इसका फ्रॉम स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ये बात आपको समझना पड़ेगा गाइस। आप लोग एपिक चूज़ करो, एपिक कितना भी गाइस शानदार क्यों ना हो, इसका जो अगर फ्रॉम स्टैंडर्ड रहेगा गाइस, तो ये आपको डिवीज़न में उतना खास फ़ायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका फ्रॉम बहुत ही ज़्यादा कम है। स्टैंडर्ड फ्रॉम दिया है गाइस। यहाँ पे अगर अनवर्डिंग फ्रॉम देता तो ये प्लेयर और भी अच्छा खेलता है, स्पेशली अब डिवीज़न मैचेस। फ्रेंडली मैच में अब इसका हाई करके खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप लोग डिवीज़न के लिए जाओगे तो इसका फ्रॉम स्टैंडर्ड ही रहेगा, मतलब जो येलो कलर का जो होता है ना गाइस, तो वही रहेगा, आपको पूरा अप नहीं देगा। मतलब 20% मैचेस में अप होगा, 80% में स्टैंडर्ड ही रहेगा। बाकी सब इस कार्ड में ठीक है। डबल टच, फ्लिप फ्लैप, सोलो कंट्रोल, मोमेंटम, ट्रिबलिंग, लॉन्ग रेंजर, कर्ल, बीट्स कलर, लॉन्ग रेंजर शूटिंग, वन पास, थ्रो पास, गेम्समैनशिप, ठीक ठाक ही कार्ड है गाइस। बट ये कार्ड इस पैक का बहुत ही अच्छा, जोला का कार्ड बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस कार्ड के लिए अगर आपको मिलता है गाइस तो इसको ज़रूर खिलाओ। और गाइस मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको कौन से प्लेयर का प्रोग्रेशन पॉइंट चाहिए, मैं उसको बना के यूट्यूब में दे दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है गाइस। बाकी इस पैक के लिए जा सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा गाइस कि देखो, पहले रियलिटी में गाइस क्रिएटिव प्लेमेकर नहीं थे, वो डीप लाइन फॉरवर्ड और गोल पोचर का जो पहले का जिस दिन कार्ड आएगा गाइस, मैं उसी दिन पहले के कार्ड के लिए जाऊंगा। इसके पहले डीप लाइन फॉरवर्ड का कार्ड आया था, वो भी गाइस बहुत ही अच्छा था, बट जिस प्लेयर का रियलिटी क्या था, पहले गोल पोचर टाइप ऑफ प्लेयर थे गाइस, इसको समझो। ये क्रिएटिव प्ले मेकर कोनामी ने दिया है, बट आप लोग ये देखो कि वो गोल पोचर थे। तो अगर वैसा अगर कोई कार्ड आता है तो उसके लिए आप 100% जाओ, क्योंकि आप लोग कॉइन सेव करके जाओगे। ये पैक के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपके पास कोई अच्छा प्लेयर नहीं है अभी के लिए, तो भी फ़िलहाल आप इसके लिए जाओ, वरना इस पैक के लिए मत जाओ गाइस, क्योंकि उतना भी खास नहीं है। बंदे लोग आपको बोलेंगे कि भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट गाइस 2-3 वीक के बाद ये बीट्स कलर भी उतना खास नहीं होगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास 110 का मेसी है। फर्स्ट और सेकेंड वीक गाइस प्लेयर बहुत ही अच्छा खेला, बट थर्ड वीक में जाके बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस अभी वो नहीं दे रहा गेम का गाइस। पहले भी सॉन का कार्ड नंबर 1 था शो टाइम, अभी भी वो नंबर 1 वाला ही कार्ड है, क्योंकि उसका क्रल 99, किकिंग पावर भी 99 था। इस पैक को मैं रिव्यू कर देता हूँ गाइस। कोल प्लामर अच्छा कार्ड है गाइस, कोल प्लामर का क्रिएटिव प्ले मेकर वाला कार्ड है। ये भी अगर आपको फ्री स्पिन में मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा। विक्टर ओसिमेन गाइस बहुत ही अच्छा प्लेयर है। गोल पोचर गाइस अगर फ्री में मिलता है तो बहुत ही अच्छा बात होगा। ये भी विक्टर का कार्ड बहुत ही अच्छा है, गोल पोचर वाला कार्ड। वेरेडो सिल्वा अटैकिंग मिडफील्डर बहुत ही अच्छा कार्ड है गाइस। ये कार्ड अटैकिंग फुल बैक एल्वारो, ये भी ठीक ठाक कार्ड है गाइस, एवरेज वाला कार्ड है ये। सीबी मार्टिनेस, ये भी बिल्डअप कार्ड है गाइस, अगर ये भी मिलता है तो ठीक ठाक ही होगा। मेरे को तो गाइस ये वाला कार्ड मिला ही है, उतना भी अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं है। और गाइस एंटोनियो गाइस, ये बहुत ही शानदार प्लेयर है एंटोनियो। इसका स्किल्स देखोगे गाइस, स्किल्स देखो, मार्शल टच, ओ माय गॉड डबल टच नहीं दिया, क्या यार कोनामी क्या करते हो। मेरे पास बेसिक का एंटोनियो का कार्ड था गाइस, क्या ही बंदा स्किल करता है गाइस। कोनामी ने इस बेचारे को पुश ही नहीं किया। यूरोपियन गाइडलाइन फ्रेंच बेकेम पावर बहुत ही अच्छा है, अगर ये आपको कम में मिल जाता है तो बहुत ही सही डील होगा आपके लिए,
क्योंकि गाइस इसमें से आपको शायद 1-2 कार्ड फ्री में ही बहुत जल्दी आप लोगों को मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। वाइल्ड वॉर गाइस डेफिनेटली नेइमार के लिए दी जाओ गाइस, नेइमार बेस्ट। हेलो कार्तिक भाई 1v1 से हाय। हेलो कार्तिक भाई, हेलो। हाँ भाई खेलेंगे ना कार्तिक भाई, आ जाओ, मैं कोड देता हूँ, आ जाओ खेलेंगे। चलो खेलते हैं आज का। गाइस कोनामी ने इस ईयर पे बहुत ही अच्छा कार्ड दिया है गाइस। आ जाओ कार्तिक भाई खेलते हैं। यार टी कर दिया। चलो हाँ कार्तिक भाई मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, 8 मिनट का कर दिया। चलो खेलते आज का पहला फ्रेंडली मैच। गाइस जो मेरे भाई लोग मेरा स्ट्रीम देख रहे हो गाइस सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई का ही चैनल है। गाइस स्ट्रीम को लाइक कर देना गाइस। सेव करो क्योंकि गेम में बहुत ही जल्द रोनाल्डो नज़ारियो आने वाला है गाइस, क्योंकि कोनामी इतना सारा एपिक दे रहा है। तो गाइस हाईली रिकमेंडेड चांसेस है गाइस रोनाल्डो नज़ारियो आने का। वो अगर भाई गोल टोटल हुआ तो गाइस बहुत ही पारू वाला कार्ड होगा, मतलब 1 नंबर वाला कार्ड होगा। यार कौन है गाइस, फिर से संभाल के रखो, जो एपिक आया उनके ऊपर मत खर्चा करेगा। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Begley. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. The
Just joining us, we are already underway. He's having a shot! He's having a shot! यार मत हो जाना प्लीज। अरे भाई भाई अभी गोल हो गया था भाई, लैग हो रहा था। That's really well cleared. Gundogan does really well to win the ball there. And here's Mbappe. That's a loose touch and the ball is anyone's. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He has found the way through. Adams does well to stand firm and defend it. Oh my God! Jim, what do you think when you see Beckham? Where do I start? Winner, hard worker, great footballing brain, set-piece expert, magic right foot, and leader. So what is he most of all? Well, from the list previously mentioned, winner. Settle for that. It's a good run down the left-hand side. He's got away. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Chance to the bullish header. That is clearly not the outcome he wanted. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. भाई इसको ड्रिबलिंग किंग बोलता है गाइस, जॉर्जियो बेस्ट को। भाई बंदा जो ड्रिबल अच्छा करा सकता है उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट कार्ड है। Can he get it through? Vinicius Junior is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, no question, that's a foul. Oh, good read. That's great positioning. So good from it. There's a sharp little ball here. Zanetti. Best. Good running, strong and purposeful. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And it's Valverde. Oh, that's superb. Not the most convincing of passes. That has been slung wide. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Strong running down that left flank. He's found the way through. Lovely bit of skill. और भी बंदे का स्पीड, एक्सेलरेशन। Gundogan defending his corner stubbornly, stood up for. He's having a hit! And that is certainly not what he had in mind. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? डबल हैट्रिक मारा था बंदे ने। Paris Saint-Germain have turned up with a human blockade. This is top defence. Quality ball. That's a good run down the left. He's shifting through the gears here. And he's there to belt it away. Played out to the right. Beckham calmly anticipates. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't see it. And we've reached half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Reflections on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break.
बहुत ही शानदार ट्रियो है आपका कार्तिक भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। Here we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Out of play for a throw. It's loose now and they want to get it back. He's cleared it out of harm's way. If they want to counter, they could do with more speed. Kimbele couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Now it's Rafinha. That is a brilliant interception. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Excellent challenge there, uncompromising. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And still, we await the first breakthrough. The defence opting here for strength in numbers. And here's Mbappe. Now it's Bale. Rafinha. Paris Saint-Germain couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. He's looking wide. He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, that's fabulous. And it's hoisted clear. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's a searching pass. No, he's just misjudged that one. Gundogan. Best, a player who needs no introduction. He is just caressing the ball. Neither of these two want to come off second best. That's good play. Best just eases him off the ball. Now, can they get him away? That's a shade optimistic. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He is through here. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now then, clash of the egos. Yeah, he's fouled him there. Beckham having a look. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. भाई लैग मत होना, बस लैग मत होना भाई. Fantastic save, Ter Stegen. Beckham! Oh, that's a... And the shot! It's there! That could turn out to be a huge goal! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now, or try and finish it off? And he's managed to get free. भाई गेम का मुझे तो लगता है सबसे बढ़िया ड्रिबलर यही भाई था.
Paris Saint-Germain nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Beckham shifted it to the flank. There will be 1 minute to add according to the board. The added time is up, and there goes the whistle. So in the end, 1 goal did it. I am Imran. Exciting encounter where both Hello, sides Imran bhai, produced welcome to my a live genuine stream. effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the And we end. come to you now with a quick request. Your reflections then, Jim. Imran bhai, They offer a welcome to very my little stream. goal threat, and it's the kind सारे मेरे भाइयों को मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है, बहुत ही अच्छा। तो कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है सबका? कार्तिक भाई बहुत ही अच्छा खेले आप। जॉर्जियो बेस से क्या कमाल का ट्रिबल करते हो आप भाई, मज़ा आ गया आपके साथ खेल के। चलो तो गाइस, और कोई मेरे साथ फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हो तो जल्दी जल्दी गाइस, कोड दिया हुआ है, आ जाओ, ज्वाइन कर लो। हाँ भाई, अब आ सकते हो, आ जाओ। ओडिनांडो कोसार, हाँ भाई आप आ सकते हो। अब अगर फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हो तो आ जाओ। ये लो 1853-1632 कोड है। तो गाइस सभी लाइक को स्ट्रीम, जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं गाइस, एक लाइक कर देना गाइस मेरे स्ट्रीम को। और सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस एक सब्सक्राइब भी कर देना आपके भाई को, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता है। और मैं आपको सजेस्ट भी कर दिया करूँगा कि आप कौन कौन से एपिक कार्ड के लिए जाओ या कौन कौन से कार्ड को आप स्किप कर दो गाइस, क्योंकि कोनामी अभी बहुत ही ज़्यादा हाई फुल कार्ड दे रहा है आप लोगों को। तो आपको अपना कॉइन भी बचाना है और आपको अपना सही एपिक कार्ड भी चूज़ करना है। मैं अभी मैच रूम को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी आ जाओ, वरना मैं मैच रूम को क्लोज कर दूंगा, मैं डिवीज़न खेलने के लिए चला जाऊंगा। चलो भाई, अब थोड़ी देर बाद डिवीज़न खेलेंगे। अभी चलते अपने रैंक पुश की तरफ। और गाइस अगर किसी को अपना आईडी रिव्यू कराना है तो मेरे को बोल सकते हो, मैं रिव्यू कर दूंगा आप लोगों का आईडी।
हाँ भाई श्योर आ सकते हो आप। 1v1 अभी 1v1 ही खेल रहे थे भाई, बट कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। हे मैन अद्रीज भाई, वेलकम टू द माई स्ट्रीम। हे मैन व्हाट्सअप, कैसे हो आप भाई? चलो आ जाओ। मैं कम फ्रेंडली, हाँ भाई खेलेंगे ना। लो भाई, लो ज्वाइन हो जाओ। 1868 0077 मैं दे रहा हूँ कोड, आ जाओ। अद्रीज भाई ये क्या आपका सेकंड अकाउंट है मेरे भाई? आफरीन चाचू कॉन्फिडेंटली, हाँ भाई इसके बाद आपके साथ खेलेंगे आफरीन चाचू। हाँ भाई इसके बाद आपके साथ खेलेंगे भाई, ज़रूर खेलेंगे आपके साथ। मैं नहीं, आप नहीं तो कौन आ गया भाई? अद्रीस भाई आप नहीं अंदर आए। आई एम हेयर। आफरीन चाचू आप आ गए, ठीक है आफरीन चाचू मैं आपके साथ अभी खेल लेता हूँ। अद्रीस भाई इसके बाद मैं आपके साथ खेलूँगा। अब ये वाला मैच देख लो, आपके साथ भी खेलेंगे भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गैरेथ बेल, नेइमार, मेसी, लेफ्ट एंड राइट। बहुत ही अच्छा है भाई आपका सीबी डिस्ट्रॉयर बिल्डअप, बहुत ही अच्छा डिफेंस है। एंकरमैन, ये शायद आपका बॉक्स टू बॉक्स होगा, बहुत ही अच्छा दिया है भाई। बैकअप में भाई आपके पास 32 टोट है, आप इसको क्यों नहीं खिलाते हो? इसको खिलाया करो, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। हाँ बहुत ही अच्छा कार्ड है भाई, इसको खिलाओ। गैरेथ बेल, हाँ ये भी ठीक है। स्क्वाड आपका अच्छा है भाई। स्क्वाड आपका बहुत ही अच्छा है भाई। आप एक काम करना भाई, आप जो स्क्वाड है ना उसको जो आपने बिल्ड किया है, आपने बहुत ही सारे प्लेयर को बहुत ही ज़्यादा क्लोज कर दिया है। आप थोड़ा सा आप एक काम करना, इस मैच के बाद स्क्रीन पे मैं आपको 4-2-2 का एक फॉर्मेशन दिखाऊंगा, और अपने स्क्वाड को पूरा वैसा करूँगा। इससे क्या होगा, इससे आपका गेम प्ले बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपने स्क्वाड आपका प्लेयर बहुत ही अच्छा है। especially here, this crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. प्लेयर लोग आपके आसपास ही has already started. तो खुलेगा नहीं। अगर बंदा There's the man we're all here to see. The thriller minute, Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. आपने जब मैं फॉर्मेशन किया है ना, उसमें आपका साइड में एक भी प्लेयर नहीं है। उसमें क्या होगा, आपने बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज रखा है ना मेरा भाई, उसमें जब मतलब बंदे लोग आउट वाइड He is through here. सारे में There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other.
Rodri takes control of enemies on the move. आपका प्लेयर बहुत ही अच्छा है फॉर्मेशन Now it's Eto. थोड़ा सा इसको वाइड Well पे seen. लेके Saw that coming. That was well played, well stopped. तो क्या होगा पूरा जो Forlan. Oh, good read. पूरा आपका He read कवर that होगा really well and stopped it. Rice. And he's intervened well there. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. He expected better, and so did he. And this is Eto. Just the goalkeeper to beat. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards. And he has shown him a yellow card. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, it's never nice to see. Well, would you believe that? It really wasn't a confident penalty, Peter. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. He's in a great position here. That is a great pick out. And this is Forlan, and it's and he was there to get a vital बहुत touch. ही अच्छा से Really anticipated that well, didn't he? बहुत ही अच्छा से And we have our very first corner. Not pretty, but it gets the job done. Colombia have the chance to go the other way. Oh, that's a vigorous challenge. And it's Forlan. Best very much a man of this moment. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Costa Curta. Oh, easy pickings there. Forlan. Oh, it's Batistuta. There will be 1 minute added time. Best. And we hit half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Just a quick comment. So your views on the first half? Well, obviously no breakthrough is yet, but it's not from the want of trying. I think at a tight game like this, that penalty becomes a huge issue. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. Substitutions taking place. So off we go once more. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to... Robson! Oh, he hit that sweetly. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, that's fabulous. Messi, this is promising. Very nicely done. Pirlo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Conte. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Searching pass he's played there. Rodri gets over and intercepts. 60 minutes played.
The pass is intercepted. Oh, it's come loose. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And he is going into that little black book. Cannavaro gets rid without sophistication. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's a sharp little ball here. Oh, well played, well sorted out. But he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. It's a pretty loose pass. And he's straight offside. अरे भाई ऑफसाइड दे दिया भाई, ऑफसाइड दे दिया, ये ऑफसाइड बिल्कुल ऑफसाइड ही है। Nicely shaped ball. Albert Ferrer calmly anticipates. Best, and he's in on goal. And a chance! It's a goal! Goal, finally man, finally. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. And the lead stays intact, just. Rummenigge clearly wanted to level things up in a hurry here. It didn't quite come off for him, but top marks for the effort. भाई मैं हार गया भाई, बैड लक मैन, नेटवर्क इशू। तो हाँ भाई, मैं आपको आपका जो फॉर्मेशन है मैं आपको कैसा रखने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार देख लो मेरा भाई। देखो ऐसा बना दो 4-2-2-2 4-2-2। अब ये वाला फॉर्मेशन देखो CF कहाँ पे है, मैं आपको ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भाई। देखो मैंने दे दिया है। दोनों गोल पोचर, एक टाइप पे आपको होल और एक टाइप पे आपको क्रिएटिव मिडफील्डर खिलाना है। मैंने प्रोफाइल विंगर यूज़ किए, बट वैसे आप यूज़ मत करना। अगर आपके पास ऐसा प्लेयर हो जो अच्छा खिला सकते हो तो आप ही यूज़ करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके जो मैंने यूज़ किया है आप वैसे यूज़ करो, आपका गेम प्ले भी अच्छा होगा, आपका फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। 1v1 आदरीस भाई, हाँ भाई खेलेंगे भाई, अब आ जाओ।
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Batistuta. Well, the greatest goal threat down below us, Peter, is Michael Owen. Forever the boy wonder. Burst onto the world scene, of course, in such sensational style and left us with that unforgettable impression. Yeah, and he'll forever be remembered for that, Peter, but his catch-me-if-you-can style of finishing and one-on-one duels with keepers, it became the norm. Absolutely so, and I guess we're all expecting him to notch a goal or two here. Cafu. Oh, nicely intercepted. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Mateus. Oh, perfectly measured that. No, he's just misjudged that one. And they're back on the ball again. And we have our very first corner. Pele plays it short. Cafu is onto this. Dundee United really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. He's got away. A lovely bit of skill. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Looking for a runner. Rummenigge. Batistuta. Yeah, they were looking for a counter-attack. That is ended up in no man's land. And that is as far as they're going to go. Well, the runner's been sold a little bit short there. Dundee United clearly should have... And it's been given away. Olise. Oh, that's a very decent... And the shot! He's scored! There is the breakthrough! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. He could be in here. Ronaldo couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Oh, what a... Oh, it's come off the upright. Oh, and with that, the half-time whistle goes. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Shapes to shoot! It's a goal! They have hauled themselves right back into it! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it.
That's going to make the boss just a little happy now. There was to be only one outcome. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. And that has added a whole new complexion to the game. And Batistuta! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. And the goalkeeper's got a good palm to that. Now the delivery. A hefty challenge, but fair enough. And now they can spring out of defence. Played into space. Oh, he had to make that, and he did make it. Pele. Xavi. Aims beyond the defence. No, not quite on the same wavelength. Now he's got space here. And the pass is intercepted. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Some really good ball movement. It's a good spell of possession, this. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And the shot! He scores! And the comeback is complete! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Substitution on the field. Number 20, Karl-Heinz Rummenigge. We have got changes Number here 11, from both sides, in fact. Number Well, this is what we've been 21, waiting for. Cristiano Well, they've done the Ronaldo. hard part now, Peter. Number Can 8, they cling on, or Mateo. even better, can they get another? Number 13, Inzaghi! coming on the field. And the lead stays Number intact, 18, just. Well, it's certainly encouraging, Number Peter. 9, At least they're going about Xavi things the right Alonso. way after falling Number behind. 17, That's a Mohamed cute Salah. ball. Number It's 7, Salah! Kyle Walker. That's just Number playing it safe 22, and simple. Scholes. Substitution. Lovely ball and a real chance now. Dundee United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And this is Xavi Alonso. Can he finish? And that would have won it. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Tampa Bay really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. There will be 3 minutes Scholes. added time. Nice looking ball. Now that's well seen too. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. That's a sharp pass. Shoots! No mistake! 2 up and in charge, and things are... And that will be it. What a terrific Finally, response it three was goals, to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so Finally, very, goal. very good. That was
We come to Well, how will we look back on that? request for What a support. game, what a show of character. It wasn't looking good at one stage, it was quite flat in the first 45 minutes, but that's how you turn things around. You get a purpose in your game and you go for it. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. Good evening to you. Oh my god. फोर 2-2-2 बहुत ही अच्छा स्क्वाड। पहले ठीक है भाई, आपके डिफेंस में आप एक काम करो, आप एक एंकरमैन खिला दो बस। और सीबी में एक डिस्ट्रॉयर खिलाओ भाई, दोनों बिल्डअप मत खिलाओ एक साथ, मत खिलाओ। एक डिस्ट्रॉयर एक बिल्डअप कॉम्बिनेशन, लेफ्ट एंड राइट गुड। यस ब्रदर, आप आ जाओ। हाँ भाई, आप आ जाओ। ये सत्यजीत भाई, वेलकम टू द माई स्ट्रीम। हाँ भाई आ जाओ, कोड दिया हुआ है 1618680077। आ जाओ भाई। हाँ भाई, मैच होगा। 1v1 आ जाओ।
So welcome one and all to a picturesque evening here. Hello, A everybody, clear and night, welcome all to the today's ingredients for a match. showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And already we're underway here. And he's worked it through. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. They've got to be quick moving this forward. Oh, he's burst through. Oh, well played. Kept cool and dealt with it. Khan did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Batistuta. That's an excellent interception. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition, and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain. And Batistuta! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. He's on it, can he get away? Stood up well to him there. Belletti, he's found a way through. Brilliantly cut out. And that has been clubbed away. Engages and forces him off the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mbappe. Excellent challenge there, uncompromising. That is a brilliant interception. Cruyff. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Tries to pass it through. Ronaldo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's been cut out, well played. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Pirlo. And the referee brings the first half to a close. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. 0-0, and we're at the halfway point. And here's Cristiano Ronaldo. Now it's Cristiano Ronaldo! He has hit that forcefully. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Mbappe. Oh, really well played. Now it's Cristiano Ronaldo. Goes down, but nothing given. Now it's Mbappe. Pinches it off him. Well, he got rid because he was under pressure.
here's Goulet. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. Knocks it into space. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. It's a loose ball. Turns and goes back, and again! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Substitution on the field. Number 14. It's their second corner of the game. Coming on the field is Big header! number 23. Mateus Vitinha. gets good distance on it. Substitution in progress. And it's Pirlo. David Villa. Pirlo. Best. Vitinha. David Villa. Now it's Haaland. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. That's just playing it safe and simple. That's really well cleared. And the counter is on. Pretty robust defending. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. There will be 1 minute added time. Mateus. Vitinha. And the referee brings it to a close. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Your reflections then, Jim. Dundee United can always take more positive... भाई अब इसके बाद वाला खेल ले रहे, ठीक है? इसके बाद वाला आपके साथ मैं खेलूँगा। आप आ जाओ भाई नेक्स्ट, इसके बाद फिर से आपके साथ खेलूँगा।
सतन भाई, मैं इस मैच के बाद आपके साथ खेलूँगा, ठीक है? मैं अभी डिवीज़न रैंक पुश करता हूँ, इस मैच के बाद आपके साथ खेलूँगा। मैंने बहुत देर तक ऑन किया था भाई, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने डिवीज़न ऑन कर दिया, ठीक है? इस मैच के बाद आपके साथ खेलूँगा। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Well, when it comes to strikers, Peter, you're not going to get much better than this man, Eto'o. Fast, strong, energetic. And, of course, with a medal collection to prove it all. Yeah, and another outstanding quality of his is leadership. He's such a respected character on and off the pitch, and never one to shirk his defensive duties either. And here's Shevchenko. Scholes. Now it's Cruyff. Ambitious ball here. And he shoots! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Seedorf. That's good running with the ball. Cruyff. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Yeah, he's fouled him there. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Van Dijk. And that's really well manoeuvred. And this is Eto'o. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Pirlo with the challenge, and he has given away a free kick. Costa Curta. And here's Shevchenko. Seedorf conjures time and space where few can. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Paris Saint-Germain have a free kick. Someone's eyeing this up with real belief here. Cruyff! That's a fine save. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Searching pass he's played there. Oh, he's got a sight of goal. He's been taken out. Could that be a penalty? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? So a chance here, what can they make of it?
And it's Pirlo. Pirlo pouring through the gears. That's going to go a long way. And they've got a throw. Paris Saint-Germain look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're Chance! And he looked every bit the assured keeper there. Cruyff clearly thought he had the beating of the keeper. Passes coming off in quick succession here. And he's in on goal. Chance, surely! ब्रो 1v1 लेटर प्ले किस ब्रदर में खेलूंगा, इसके बाद खेलूंगा भाई, Well, it's an इसके बाद example लिंक of कर दूंगा, counter-attacking at its जिसको finest. जिसको खेलना है भाई Real cut फटाफट thrust. ज्वाइन कर जाना, ठीक है। After 38 minutes is number 40, Johan Cruyff. Johan Cruyff. Johan Cruyff. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Quality ball. Paris Saint-Germain looking to pass their way through. Mateus. Eto'o. Now it's Cruyff. And he's worked it through. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. There will be 3 minutes at a time. Decent enough try. Pirlo is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Now it's Eto'o. Nice interception, his positioning was spot on. Costa Curta. And that is going to be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. What do you attack on the first 45 minutes? I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they could expect more of the same in the second half. Leading 1-0 at the break. There's the start of the second half. A solitary goal. That has been the crucial difference. And it's Gattuso. Paris Saint-Germain finding their passes. Cannavaro with the clearance. That's really well manoeuvred. Now that's well seen too. And that's put paid to a promising move. Oh, just skips past his man.
good-looking ball. Shevchenko. Oh, no, that was never going to make it. That's good. Could be danger here. Goes for a shot. Goal! Paris Saint-Germain are back on level terms. And it has to be said, an absolute gift. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. देखना भाई अभी आवाज़ ठीक हुआ गेम के अंदर हाँ भाई, क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं करता हूँ इसीलिए आवाज़ मेरा ज़्यादा स्लो आता है गेम के अंदर। हाँ भाई, कर दिया है। देखो अब आवाज़ ठीक है या इससे ज़्यादा कम करूँ, एक बार देख लो। मैं हेडफोन यूज़ करता हूँ भाई, इसीलिए थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम होता है। That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, easy pickings there. Oh, now here's an interesting matchup. Gattuso cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to... And he has been fouled there. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness हाँ of the भाई, offence, डिवीजन ही but खेल रहा none हूँ over और its रेड कार्ड भी लग गया repercussions. अभी। They'll have to see out the rest of the game with 10 men. तीन लोगों को ही लगा है भाई। बस भाई एक गोल हो जाए बस। Substitution on the field. Number 40. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. That's a good run down the left. भाई नेटवर्क ही ख़राब चल रहा है, इसीलिए मैं डिवीज़न पुश नहीं कर रहा हूँ अभी। नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। भाई बार बार आईफोन में गेम रुक गया, स्क्रीन का लॉस आ गया। हाँ भाई, यही हुआ क्योंकि नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा भी इशू कर रहा है भाई। डिवीज़न खेला ही नहीं जा रहा, नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है। लो भाई आ जाओ। शाहिद भाई आ जाओ भाई। मैथ्यूज एज ए DMF। हाँ भाई, रेड कार्ड भी लग गया, मैच भी हार गए, क्या बोलूँ।
भाई अभी डिवीज़न मत खेलो भाई। अगर आपके पास बैच है, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास डिवीज़न 1 का बैच है तो फिर डिवीज़न मत ही खेलो तो अच्छा है, क्यों अपने हेल्थ को ख़राब करना। और कोनामी जानबूझ के आपको अभी प्लस भी उतना नहीं देगा। जब भी आप 1650 के ऊपर जाओगे भाई। आपका कौन सा डिवीज़न है भाई साहिद भाई, आपका कौन सा डिवीज़न है? ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा अकाउंट है भाई, बहुत ही अच्छा अकाउंट है। 110 मेसी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार अकाउंट है। यूट्यूब तो আসছে না। चलो भाई, लेट्स प्ले। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game as the passionate crowd demands. ये मैं नहीं हूँ ब्रो, someone else joining। ओ भाई, कौन ज्वाइन कर गया? मेरा 2000 रेटिंग हो चुका है मैं अकाउंट में, कोई और ज्वाइन किया मैं नहीं है, रेंडम आ गया है कोई। ये कौन ज्वाइन करा है? मैं भी नहीं जानता भाई। So off we go then. So here is the master craftsman, the arch schemer, the distributor-in-chief, Andrea Pirlo. And I imagine he's already thinking of ways to pull all the strings from that deep-lying position of his. He's great. Messi! Just a whisker away. गाइस, जिसने भी ज्वाइन किया मेरे को मैसेज करो भाई। ये क्या करते हो भाई? एक बंदा मेरे साथ खेलना चाहता है, अब दूसरा बंदा आ जा रहा है भाई। मेरे को बोल के आया है भाई, वेट कर रहा था। बारी आओ ना भाई, सबके साथ खेलेंगे। Get a throw in. बारी आओ भाई, सबके साथ ही मैं गेम खेलूंगा। Played out to the right. Van Basten. Pele. Shot a goal! And he's done it! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So a breakthrough already. It's a really well measured ball. Mateus. First quarter of an hour gone. And here's from Mario. Well, that's surely a foul. Free kick. ठीक है भाई, आप ही आ जाओ, आपके साथ ही मैं खेल लेता हूँ।
अब आ जाओ भाई, And that's it. साहिद भाई अब आ जाओ। So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. भाई जिसने भी ज्वाइन किया सॉरी ब्रदर, क्योंकि साहिद भाई लाइन में थे, साहिद भाई पहले थे, सॉरी ब्रदर। मैं आपके साथ भी खेलूँगा बाद में, पहले साहिद भाई के साथ मैं खेल लेता हूँ। साहिद भाई अब आ जाओ भाई, कम जॉइनिंग साहिद भाई। और भाई जो स्ट्रीम देख रहा है भाई एक लाइक कर दो भाई। शाहिद भाई ये आप ही हो ना, मेरे को एक बार बोल दो, यस बोल दो मेरे भाई, नहीं तो दूसरा बंदा ज्वाइन कर जाएगा। भाई जो भी ज्वाइन हुआ मेरा भाई, शाहिद भाई बहुत देर से मेरे साथ गेम खेलने के लिए वेट कर रहे हैं भाई। मैं आपके साथ भी खेलूँगा भाई, थोड़ा देर रुक जाओ। शाहिद भाई मैं नया रूम क्रिएट कर रहा हूँ, आप मेरे नए रूम में आ जाओ। मेरे आईडी का नाम है बिग डैडी कूल। हाँ भाई अब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। এটাকে একটু অফ করে দাও না, ডোরটা আওয়াজ আসছে, ডোরটা অফ করে দাও। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ। हाँ मेरा आईडी नाम है बिग डैडी कुल। हाँ भाई आप ज्वाइन हो गए भाई, सबके साथ ही खेलूँगा, वैसे मत ज्वाइन किया करो भाई, सबके साथ ही मैं खेलूँगा भाई। जो खेलेगा मेरे को एक बार बोल दो, इसके बाद शाहिद भाई के बाद बख्शी भाई मैं आपके साथ एक खेल लूँगा। ओके शाहिद भाई बहुत देर से वेट कर रहे थे मेरे लिए कि भाई के साथ कब गेम खेलेगा। तो लेट्स गो। स्ट्राइकर में फॉक्स इन द बॉक्स, राइट विंग बेले। ओह भाई ये यूनिक कार्ड है, ये आपको मिला है।
शाहिद भाई, आई एम हेयर टू। ओके ब्रदर अर्जुन, ओके अर्जुन भाई, आपके साथ भी खेलूँगा, आई एम हेयर टू। हाँ भाई, आपके साथ भी खेलूँगा। हाँ, परफेक्ट स्क्वाड है आपका, परफेक्ट स्क्वाड है, रूल भी चेंज। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it और is मेरे an को कमेंट absolute करके बोले delight कि to आप अभी have Jim करंट Beglin कौन से beside me. डिवीजन में Well, हो? thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And as you can see, we've already started here. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic once he comes inside. Anything is possible. Now it's Cruyff. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Hazard. Looking for the run. They've got to make this nice and quick. And he's lost his man here. Good challenge. Excellent challenge. ओ भाई There's साहब, great साला running on show साला here, मास्टर but डन ultimately हो there गया was भाई, no गोल way हो through. गया। मामा साला Probing pass. साला साला That's a delicate pass. Gets his head on it! Oh, surely that deserved better. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Can he get it through? Oh, good take in a good area. Decent chance! ये तो गोल होगा, ये गोल It's होगा, ये there! गोल होगा। One sweeping move executed with भाई deadly बत्तीस efficiency. चूड़ा के पास Yeah, बॉल when you're जाता hit है on the और counter-attack like that, it's like defending walking the- into a sucker punch, and they're dazed. भाई ये 32 चूड़ा कैसे है? बॉक्स इन द बॉक्स ऐसे किया So the था। first moment of real कैसा significance. है भाई ये? Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. He's trying to skip past his man. He's found some space. Ah, such a clever touch. Great defending, strong and determined. Mohamed Salah picks it up out wide. Hazard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he's on his way! Plenty to... Can he finish? Well, he's not happy with that ओ challenge, भाई but the बहुत ही referee has अच्छा let it डिफेंस, go. बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही दमदार डिफेंस। And here's Mohamed Salah. And it's Cruyff. Batistuta. Milan truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Now it's Cruyff. Bale. Palmer. He is through here. He's had a shot. And that is doing no harm at all. भाई ये गोल हो जाता Didn't भाई। quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This प्रिया team know how to चक्रवर्ती counter, and आईडी, they'll be looking to do आकाश it every chance they यार, get. हेलो प्रियंका चक्रवर्ती, हेलो प्रिया चक्रवर्ती, हेलो 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 प्रिया, हेलो।
अरे भाई आकाश प्रो, ओके आकाश, क्या आपका नाम आकाश है भाई? Tries to play it through. आपका आईडी का नाम आकाश है Hakimi. या? Great vision. Van Dijk calmly anticipates. Well seen. And it's half time here. भाई नाम क्या है आपके No आईडी? shortage of industry or intent thus far. A little आईडी आकाश inspiration प्रो and CR7, inventiveness perhaps the हेलो। only things अरे lacking. भाई It's a dressing room that needs rousing half time because in truth मैं they've not भाई really been at it so far. बॉय हूँ। And ओ if the अच्छा pep अच्छा, talk works, आपका आईडी we का may नाम see a दिया very चक्रवर्ती। different side second half. We need to. समझ गया भाई, आपका नाम आकाश We're है। already back up ओके and आकाश running भाई, after half आपका time. भाई। Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. That's good vision. Shot, tries a shot! He's got a goal! AC Milan are आईडी रिव्यू, elsewhere. आईडी रिव्यू यू डू, गर्ल का नाम रखा हुआ Well, है, was he अच्छा, ever अच्छा, going to समझ miss गया। that? Of course he wasn't. Well, of course, it's आईडी very हाँ भाई, plain to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves any favours then. They really should have भाई picked him साइड up भाई के sooner. साथ इसके बाद आप लोगों का आईडी रिव्यू करता हूँ। That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to भाई finishing. सभी लोग स्ट्रीम देख रहे हो भाई, That's अपने all. भाई पे एक लाइक कर दो जल्दी। Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Now that is a hefty challenge. Looking for options for लाइक movement. कर दो भाई अपने भाई को। Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Insigne गेम प्ले going अच्छा full आपका tilt साइड down the भाई, बहुत ही left. अच्छा गेम प्ले He's got away. And the shot! ये No वाला प्लेयर, mistake! ओ माय गॉड भाई, इसके बाद They ब्रिट्स get कलर है, themselves in ओ माय front. गॉड Smiles broad and भाई beautiful. पता ही नहीं That था। is a हाँ भाई इसके पास cracking तो hit. ब्रिट्स कलर That है। is simply tremendous. I मैं mean, देख how के easy समझा would it नहीं have था। been to get across it or overhit it? Perfection. Oh, he's been caught on it here. Eto. अरे भाई साहब थोड़ा सा टच हो जाता बस। Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Threads. Oh, he's been caught napping. And he welcomes it in. And he shoots. He scores. गोल And the lead Goal, lost. goal. No time at all. Well, if ever you want to see a lesson in कौन गोल responding to a करा? deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are भाई up. मेरा स्क्वाड है Truly AC superb. Milan A goal of such और जो आपको supreme वाइट वाला quality, देख रहे हो ये composure हमारे and नए भाई class. साइड Well, भाई it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. AC मिलान वाला मेरा स्क्वाड है भाई, गुड Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams भाई can lose साहब, focus भाई after गोल था भाई, scoring, नहीं हुआ but you भाई। still have to take your गोल chances. था भाई ये पूरा Brilliant. पूरा गोल था, Rijkaard. पूरा मेरा ही गलती है, मैंने डैश को Azar. Over to the left. स्लाइड कर दिया। Nice bit of skill and he's away. Insigne. ये पूरा Oh, मेरा ही that's गलती है, fabulous. पूरा मेरा गलती की वजह से गोल नहीं। भाई अभी बीट्स कर लेंगे मत मारना Cleared भाई। without बच complication. गया। And reclaimed it in a अभी trice. बीट्स कर लेंगे मारते And तो it's ये वाला Azar. गोल होता। Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very जो end, though. मजा ड्रिबल करके डबल टच करके गोल मारने में है ना, वैसा मजा It's a promising build up this. Plenty of really nice passing. Oh, perfectly measured that. And into the grateful arms of the keeper. करके अंदर जा रहा है Well, पूरा, that might be that, Peter. Maybe पूरा both sides ड्रिबल just किया going to पूरा have to बंदा, settle for the डबल draw टच now. 1-1 करके, भाई इसमें अलग ही मजा है भाई। Mohamed Salah is flagged offside.
substitution for Milan. Number 9. We have got changes here Number from both sides, in 14, fact. Johan Cruyff. Number 8. That's a cute ball. Ryan Robson. That looks a good ball Number through. 6, Pirlo. And Yati frames comfortably. 11, निकल Mohamed गया। Salah. Coming on the field. Looking for a Number run-up, 13, and he was quick to Mbappe. react. Number 19. Rijkaard. And we're done. भाई ड्रॉ हो Decent गया game of भाई। football, that. Intense, चलो भाई intriguing. किसका आईडी And both रिव्यू करना है sides, मेरे as को it बोलो, turns मेरे को out, मैसेज unable to करो be भाई, उसका separated. आईडी मैं रिव्यू कर दूंगा। मेरा Would टीम you स्ट्रेंथ summarise what we've seen 3000 today then, Jim? Well, neither side could get over the line here. ठीक है भाई, Perhaps कोई one बात नहीं, team मैं आपके might साथ be अपने happier, but at the हाईलाइट final वाले reckoning, स्पॉट it's के साथ honestly खेल लूँगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है भाई। देखो भाई, आकाश प्रो CR7, हाँ भाई मैं कोड दे रहा हूँ आपको भाई। किसी को आईडी रिव्यू करना है तो मेरे को बोलो अभी, क्योंकि लास्ट मैच मैं आकाश भाई के साथ खेलने के बाद मैं लंच करने के लिए जाऊंगा। लैग होता है, हाँ भाई, गुड गेम प्ले, बट भाई आपका लैग होता है। हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा लैग होता है, क्योंकि भाई मैं रूम के अंदर खेल रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा लैग होता है। भाई आपका भी गेम प्ले बहुत ही, मेरा चैनल का फॉलो कर लेना ब्रो। हाँ भाई, आप एक काम करो, आप मेरे को फॉलो कर लो, मैं भी आपको फॉलो बैक कर दूंगा। ओके भाई, भाई डिवीज़न 1 अभी इतना चला गया मेरा भाई, और डिवीज़न 1 रैंक 2056, 2 लाख भाई साहब। कर लिए है ब्रो, थैंक्स ब्रदर। रुको मैं अभी आपको कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। भाई आपके चैनल का मेरे को नाम बोलो, मैं कर दे रहा हूँ अभी। आपके चैनल का नाम बोलो। लो भाई, लास्ट मैच आकाश भाई आपके साथ मैं लास्ट मैच खेलूँगा, इसके बाद मैं लंच करने के लिए जाऊँगा भाई। भाई आपके चैनल का नाम मेरे को बोलो, मैं अभी सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ आपको। हाँ, स्क्वाड चेंज कर लेता हूँ। आपका टीम स्ट्रेंथ कम है ना मेरा भाई, ठीक है रुको, स्क्वाड को चेंज कर लेता हूँ। ट्रेंडिंग कार्ड्स, चलो 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 भाई, आपका मेरा बराबर हो गया। चलो भाई, हालैंड किधर गया भाई? Yo bro, what's up? और फैजल व्हाट्सअप भाई, कैसे हो? वेलकम टू द माई स्ट्रीम भाई। लो भाई, इसको हटा देते हैं भाई। आप ज्वाइन कर लियो भाई, भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन करो आकाश प्रो। मैच नहीं भाई, काम कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, आप मैच नहीं खेलोगे आज भाई? आज भाई नहीं भाई, आज नहीं आ पाऊँगा। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई, आज पूरा मैच देखूँगा। कल को आऊँगा भाई फिर से लाइव, कल आपके साथ खेलेंगे मेरा भाई।
ठीक है भाई, आज यही तक फ्रेंड मैच एंड करता हूँ भाई, ठीक है। डिवीज़न 1 विथ POTW प्लेयर्स, ओ माय गॉड, और ऐसे साथ में है। हाँ भाई, आज को तो नहीं हो पाएगा, आज को पूरा मैच देखूंगा, साथ में है। कल को खेल लेंगे भाई आपके साथ आकाश भाई, कल खेल लेंगे आपके डिवीज़न 1 विथ POTW। बहुत ही अच्छा आपका गेम प्ले है। विनू, हेलो भाई विनीत भाई, विनू, हेलो विनू भाई, वेलकम टू द माय स्ट्रीम। गाइस, किसी को आईडी रिव्यू कराना है, क्योंकि मैं लंच करने के लिए जाऊंगा। अगर किसी को आईडी रिव्यू कराना है तो आईडी चेक करोगे? हाँ भाई, आईडी चेक कर दूंगा। फटाफट अपने आईडी का नाम बोलो, क्या था? आकाश प्रो CR7। ओके भाई, स्पेस है या स्पेस नहीं है, ये बात बोलो। आकाश प्रो CR7 डिवीज़न 4 प्लेयर। भाई क्विक काउंटर भाई, पहले तो एक अच्छा सा मैनेजर ले लो आप, मेरा यही सजेस्ट है। आप अच्छा सा पहले एक मैनेजर लो और फॉर्मेशन को ठीक करो भाई। आपका फॉर्मेशन RB ठीक है, CB में बिल्डअप डिस्ट्रॉयर खिला दो, लेफ्ट विंग में अटैकिंग फुल बैक खिला दो, और एक CB को DMF कर दो भाई। आपके टीम में DMF ही नहीं है। राइट विंग ठीक है, लेफ्ट विंग ठीक है। SS भाई, आप ये को खिलाओ भाई, एम्बाप्पे को खिलाओ इसको। ये जिस पोजीशन का प्लेयर है SS में जिसने आपको रखा है, इसको चेंज करके आप ये को खिलाओ। 4-1 में आपका डिफेंडर एंकरमैन रखना भाई। DMM में एंकरिंग मस्ट, और आप एंकरमैन को डीप लाइन दे देना बस। और CF में आपके पास एक और प्लेयर है, अच्छी ठीक है भाई, आईडी ठीक है, बट फॉर्मेशन थोड़ा सा ठीक कर लो और एक नया मैनेजर खरीद लो। अगर आप क्विक काउंटर हो तो आप जाबी का मैनेजर ले लो, बस बहुत ही अच्छा खेलोगे, डिवीज़न 2 या 3 तक चले जाओगे भाई। समीर, हाँ भाई, आपका भी देख लेते हैं। ओके समीत भाई, आपका आईडी 4222 बिल्डअप 1 डिस्ट्रॉयर, ठीक है भाई। अब अपने जो LB है ना, अगर इसके पास अच्छा क्रॉस होगा तो इसको अटैकिंग देख के आप क्रॉस खिलाना, ठीक है। तो ये वाला प्लेयर आपका ऊपर जाएगा, आप दोनों साइड से क्रॉस खिला सकते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो परफेक्ट पोजीशन, ये वाला भी अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हालैंड है, आप हालैंड को सेकंड में ना माना। अगर इसके पास सुपर सब है तो अच्छा है, नहीं तो आप सुपर सब खिला देना बस, ठीक है। आपके पास जो RMF है उसको भी आप सब्स्टिट्यूट में, जो CMF है आपको उसके साथ ये कर देना, स्वाइप अप कर देना, ठीक है। स्क्वाड ठीक है भाई, स्क्वाड ठीक है।
दोनों एक काम करना आप, अगर एंकरमैन है तो एक एंकरमैन लगा देना बस DMF। एंकरमैन भाई मस्ट है। हाँ भाई आपका भी देखते हैं सिद्धार्थ। ओके भाई आपका भी चेक कर देता हूँ। ठीक है भाई, स्क्वाड ठीक है। फॉर्मेशन आप 4-2-2 है, ठीक है। अगर आपको जमता है भाई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मेरा स्ट्रीम में आप देख लेना, मैंने अपना 4-2-2 का एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब वो वाला दे देना। हाँ भाई आपका देख लेता हूँ। भाई आपका स्पेलिंग का पहला वर्ड क्या स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर, ये मेरे को बोलो। ओके ओके, SIDDH सब स्मॉल, ओके ओके। SIDDH 4RTH। चलो भाई। ओ माय गॉड, डिवीजन 1 प्लेयर, ग्रेट मैन। 2,49,471। नाइस, काका है आपके पास, वाओ। ओ माय गॉड, ग्रेट स्क्वाड, 10 में से 10 भाई। दोनों CF बहुत ही अच्छा है भाई। इस मेसी को क्रिएटिव प्ले मेकर है, अटैकिंग SS बहुत ही अच्छा जाएगा भाई, ठीक है। और इसको कोशिश करना राइट साइड से खिलाने के लिए, जैसे कि आप ब्रिट्स कलर मार सकते हो, ठीक है। DMF एंकरमैन गुड। CMF बॉक्स टू बॉक्स, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना, बहुत ही नीचे आ गया बॉक्स टू बॉक्स, मिडिल में रखना, जैसे कि ये आपके मतलब स्ट्राइकर्स बोलो या आपके क्रिएटिव मिडफील्डर ऐसे इसको पास दे सके, ठीक है। ओके, LB राइट भी गुड, CF ऑलवेज गुड। काका है, काका को आप सेकंड हाफ में यूज़ कर लेना मेसी की जगह पे, और रोनाल्डो और एम्बाप्पे को सेकंड हाफ में आप यूज़ कर लेना जब इनका स्ट्रेंथ कम हो जाए, या आप अपने इस CF को भी यूज़ कर सकते हो, हिजाजी। बस बस भाई, बहुत ही अच्छा स्क्वाड है, बहुत ही अच्छा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ब्लिट्स बॉय, ठीक है, आपका लास्ट है। ब्लिट्स बॉय बस आपका लास्ट, उसके बाद मैं लंच करने के लिए जाऊंगा भाई, ठीक है। BLITZ ओके ओके, डबल ओके। ओके आ गया डिवीजन 1 गाइस, पहले आपके पास, बहुत ही अच्छा भाई। कैसा खेलता है रिव्यू देना मेरे को, नेक्स्ट डे आपके साथ मैच खेलूँगा। ऑयन विश्वास, ओके भाई। भाई साहब
CF भाई, CF में एसएस पोजीशन में आप एक काम करो, जोला को पहले हाफ में खिलाओ, सेकेंड हाफ में आप सन की कार्ड को CF मत खिलाओ, एसएस पे खिलाओ, इससे आप ब्रिट्स कलर मार पाओगे, ठीक है। सेकेंड में एंकरमैन, हाँ भाई एंकरमैन भी ठीक है। सेंचकॉफ है आपके पास, हाँ ठीक है। भाई आप पेले को क्यों नहीं खिलाते हो फर्स्ट हाफ में? पेले को खिलाओ, पेले को खिलाओ भाई, पेले को CF करके खिलाओ, बहुत ही अच्छा खेलेगा। स्पीड बढ़ा दो। आपके पास लेफ्ट विंग से तीनों अच्छा बीट्स कलर है भाई, आप तीनों बीट्स कलर को जिसका रेटिंग अच्छा जाएगा वैसे खिला सकते हो, ठीक है। पेले को खिलाओ। इंजागी को आप सेकेंड हाफ में उतार देना, सुपर सब। भाई डिफेंस में आपका गड़बड़ है, डिफेंस पोजीशन में आपको नहीं भाई, डिफेंस ठीक है। मैंने सोचा कि दोनों डिस्ट्रॉयर है, नहीं बिल्डअप डिस्ट्रॉयर, ठीक है ठीक है, ओके ओके। LB राइट भी बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा स्क्वाड है भाई। बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। सेकेंड हाफ में फिर पेले, हाँ भाई सेकेंड हाफ में देखो, अगर पेले को आप स्ट्राइकर खिला के, क्योंकि नया कार्ड है, स्ट्राइकर में भी बहुत ही अच्छा खेलेगा, ठीक है। सेकेंड हाफ में आप पेले को खिलाओ, जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से उतारो प्लेयरों को, बहुत ही अच्छा खेलेगा, ठीक है। ठीक है आयन भाई, मैं आपके साथ भी नेक्स्ट डे आपके साथ भी फ्रेंडली मैच खेलूँगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, चलो मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर रिव्यू माई ID टीम, थैंक्स आयन भाई, थैंक्स ब्रदर। हाँ भाई, आपका मीजल्स इज़ नॉट बिग ID ब्रो माई, ठीक है भाई। नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ बात करूँगा, ठीक है। आई एम लेफ्ट आउट, ठीक है भाई, एक लाइक कर देना, ठीक है स्ट्रीम को। ओके भाई, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ।